Hi friends, today we are going to discuss about Shabda Bhed. Moving to the Shabda Bhed, we'll see what is Shabda. शब्द मीन्स वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई को शब्द कहलाती है. शब्द इज अ वर्ड. हाउ अ वर्ड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग few letters. So वर्णों के मेल. वर्ण means what? What is the meaning of वर्ण? वर्ण means letters. So वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई. सार्थक इकाई means a meaningful unit. That is शब्द. For example, क plus म plus ल. What is this क म and ल separately? They are called वर्ण. इसके मेल से when we are joining this, क्या बना है? इसके मेल से बनी ये सार्थक इकाई. It is formed a meaningful unit. Kamal. Kamal means lotus. That is a word. Ma cha la e. Machli means fish. So this also having a meaning. So it is called word. If for example lichama, is it having a meaning? Lichama or lakamal? No, that is not a word. Okay, only those words that is formed by joining these letters, which is having a meaning, that is only called as shabda. Next, शब्दों के भेद. Now we'll move on to शब्दों के भेद. It is divided into based on its origin. उत्पत्ति के आधार पर. From where a word originated. For example, Surya, Agni. These all words are we are using in Hindi also, but its origin is from Sanskrit. So like that. That is called उत्पत्ति के आधार पर. Based on its origin. तत्सम शब्द, तद्भव शब्द. Like that. प्रयोग के आधार पर means based on its usage. अर्थ के आधार पर मीन्स बेस्ड ऑन इट्स मीनिंग. रचना के आधार पर मीन्स बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन. हियर इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली प्रयोग के आधार पर एंड अर्थ के आधार पर. प्रयोग के आधार पर शब्द भेद मीन्स बेस्ड ऑन इट्स यूसेज. फॉर एग्जाम्पल एज वी डिस्कस्ड वन वर्ड कलम मीन्स lotus. What is the meaning of kalam? Kalam means lotus only, but in grammatical view, what is the meaning? In grammatical view, what is lotus or kamal? It's a sangya, right? And another example, sundar. What is the meaning of sundar? Beautiful. But in grammatical view, what is beautiful? It's adjective, visheshan, right? Okay, and so that type of words, how we are using a word. Many words will be there. So how we are using a particular word, that is प्रयोग के आधार पर शब्द भेद. So it based on this usage, it is divided into sangya. It can be sangya, it can be sarvanam, pronoun, it can be visheshan, adjective, it can be kriya, verb, kriya visheshan, adverb, samuchaya bodhak, conjunction, sambandha bodhak, postposition and vismayadi bodhak, interjunction. So based on its usage, a word can be all these things, anyone, right? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद. अर्थ के आधार पर शब्द भेद. अर्थ के आधार मीन्स बेस्ड ऑन इट्स मीनिंग. बेस्ड ऑन इट्स मीनिंग इट इज डिवाइडेड इनटू एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द एंड श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द. वी विल डिस्कस वन बाय वन. एकार्थी शब्द. एकार्थी शब्द मीन्स ऐसे शब्द जिनका साधारणतः एक ही अर्थ होता है. कॉमनली ओनली वन मीनिंग विल बी देयर फॉर अ वर्ड. कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता. एनी दूसरा अर्थ मीन्स एनी इट वोंट बी हैविंग एनी अदर मीनिंग. ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इस प्रकार के होते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन. नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रॉपर नाउन. सो ऐसे शब्दों इस प्रकार होते हैं, एकार्थी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल राधा, Ram, the name of a person, right? Radha, what is the meaning of Radha? Is it having any other meaning? No, Radha means Radha only, Ram means Ram only. And Bharat, देशों के नाम. Bharat, what is the meaning of Bharat? India. We don't have, there is no other meaning for Bharat, India only. China means China, America means America only. It is not having any other word. So one word having one meaning, that's it. That is called ekarthi shabd. पर्यायवाची शब्द. समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं. सो पर्यायवाची शब्द मीन्स सिनोनिम्स, a word having many other similar meanings, a word having similar meanings. So पर्यायवाची शब्द is also called as समानार्थी शब्द. For example, this is सूरज,
sun. What are the other meanings for Suraj? Dinakar, Divakar, Surya, Ravi. All these words are words meaning, and what's the meaning of all these words? Suraj or sun only. So these kind of words are called Paryayavachi or Samanarthi Shabda. Anekarthi Shabda. The name itself says Anek Arthi. Anek means many. Arth means meaning. So a word having many different meanings are called Anekarthi Shabda. जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अंबर. अंबर मीनिंग इज स्काई. Another meaning for amber is dress. So these type of words are called anekarthi shabda. A word having different meanings. Anekarthi. विपरीतार्थी शब्द. विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थी शब्द, विलोम शब्द या उल्टे शब्द कहते हैं. विपरीत अर्थ मीन्स ऑपोजिट. Opposite words are called विपरीतार्थी शब्द. For example, see here, hot, cold, dry, wet, healthy, sick. All these words are opposites. So these kinds of words are called विपरीतार्थी शब्द. श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द. Shruti Sama Bhinnarthi Shabda means Shruti means the sound. Sound will be same. Sama means same. So Shruti will be same. The sound will be same, but Bhinna Arthi. Bhinna means different. What will be different? Arth, meaning will be different. So Shruti Sama, but Bhinna Arthi. The meaning will be different. That वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं. नथिंग बट राइमिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज हाउस, ग्रह, प्लैनेट, ग्रह. सी द श्रुति इज सम, राइट? द श्रुति इज सेम. ग्रह ग्रह, बट इज द मीनिंग सेम? ग्रह मीन्स हाउस, ग्रह मीन्स प्लैनेट. सो दैट इज श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द. Hope you understood the concept clearly. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. If you have any doubts, please put in the comment box. Thank you.